Good evening, everyone. We'll start shortly. All right. So, welcome all in the weekly webinar of Market Masterclass with Religare. As most of you know, that we talk about the market outlook for the week, uh, the overall positioning that we had in the passing week for the key sectors, benchmark indices, top five gainers, losers from the Nifty 50 basket. So, kind of a snapshot of how the market performed during the week, uh, followed by our view for the next week and some of these stocks which one can keep on radar for long and short trades. We conclude the session with a quick feedback poll, and then we start with the Q&A. So anything related to the presentation, if you feel that you wish to know more about that, any particular sector, so we can definitely discuss during the Q&A part. तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीकली वेबिनार में, जिस वेबिनार में हम बात करते हैं मार्केट्स की, क्या परफॉर्मेंस रहा, किस तरीके से हमने देखा, चाहे वो बेंचमार्क इंडाइसेस हों, चाहे वो सेक्टोरल इंडाइसेस हों, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में किस तरीके की परफॉर्मेंस रही। तो पहले ये एक स्नैपशॉट लास्ट वीक की परफॉर्मेंस का, उसके बाद हमारा व्यू की इंडाइसेस पे, निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स पे, एंड कौन से स्टॉक्स जो कि आपके रडार पे होने चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद disclaimer first that the information which we share here in this presentation is not a trading or investment recommendation. So before making any decision based on the information shared, please check with your financial advisor. तो जो भी इंफॉर्मेशन हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इट्स नॉट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। तो कोई भी जो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें उससे पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। Now this is the snapshot of this week, how the markets performed. So as you can see on the screen itself, another week of negative closing. Last week was muted one, and this week it was volatile, but we've ended on a negative note. So both Sensex and Nifty settled lower, in line with the benchmark move. Majority of sectors they were under pressure. Realty topped the list, followed by energy, media, FMCG, and pharma. IT was the one basically which could manage to recoup the losses that we had last week. So that was a good comeback for the IT. And lastly on the list, the top five gainers and losers. So for the obvious reason, like three names from the IT basket: Tech Mahindra, HCL Tech, TCS among the top gainers out of five top stocks from the Nifty 50 basket, alongside with Apollo Hospital and M&M. Then we have Trent, Coal India, Hindalco, Grasim, and Asian Paints. That were the top losers, for the week. So now, अगर इस पूरे वीक को हम समराइज करें कि कैसा रहा ये हफ्ता, तो देखिए पिछले करीब 5 हफ्तों से मार्केट का टोन नेगेटिव है। ऑलमोस्ट करीब करीब आप 10% करेक्ट कर चुके हैं अपने रिकॉर्ड हाई से। 26,270 के अराउंड से हमने सेलिंग ये देखी थी मार्केट में स्टार्ट होते हुए, और आप अब 24,000 के पास दोबारा से आप पहुंच गए। तो एक डिसेंट करेक्शन अभी भी, बट वही टोन बना हुआ है। विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से पोजीशनिंग है, बट इस वीक भी हमने नेगेटिव ही क्लोज किया।
ज्यादातर सारे सेक्टर्स जिस तरीके से इंडेक्स था वैसे ही नेगेटिव साइड पे रहे। केवल आईटी रहा जिसमें कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, एक कमबैक देखने को मिला, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है, कंसिडरिंग कि अगर आईटी और बैंकिंग ये दोनों अलाइन हो जाए तो फिर मार्केट में एक रिस्पाइट, एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी बनती है। बट एनीवेज अभी तक तो यही मान के चलिए कि आईटी ने एक स्ट्रेंथ दिखाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डैमेज कैप हुआ मार्केट में। अदरवाइज प्रेशर शायद और होता और हम 24,000 को शायद ब्रेक कर देते। गेनर्स लूजर्स की स्क्रीन आपके सामने है, जो नीचे आप देख पा रहे हैं। तो आईटी के स्टॉक्स 5 में से 3 वो गेनर्स में रहे, और लूजिंग साइड पे आपने अक्रॉस दी बोर्ड देखा कि जहां पे आपने प्रेशर देखा। नाउ हाउ वी आर पोजिशन ऑन द इंडेक्स। सो फर्स्ट we'll talk about Nifty. So this chart we have been discussing for quite some time now, and we were here you know before Diwali that we connected last time, and since then nothing has changed much in terms of positioning. Means if you remember that the last time also we've discussed about 24,000, 24,500. So the zone is still intact. You may claim that we have breached that level 24,000 earlier also. Intraday, yes, but on the closing basis, it was almost on the neckline. Means this session, this red session was the day where Nifty breached 24,000, and but on the closing basis, and this session too, but on the closing basis we could manage to hold above 24,000 mark. So 24,000 on the closing basis, and on this candle we have penetrated 24,500 also for brief, but we couldn't close. So we need a close either side. Means if we close below 24,000, then this red line, this long-term moving average, which is placed around now 23,500, 550 zone, that will be the next major support and key support for the market. In case of bounce recovery, once we cross this hurdle, then this 24,800, this neckline area, 800 to 850 something, will be the next major resistance. So broadly, the range for Nifty is intact, and we need either side break to recovery, to witness some recovery, or to retest the long term average. तो देखिए निफ्टी का ये चार्ट अगर बिल्कुल डिटेल में ना जाके एकदम पॉइंट पे अगर बात करें, 24,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं हो रहा है बाजार, क्लोज ये नहीं कि एकदम आप 23,997 जैसे कि लास्ट टाइम हुए थे, उसको एक डिसाइसिव क्लोज नहीं। बेसिकली आपको एक डे एंड के पास एक क्लोजिंग हो जाए, और डे लो के पास, सॉरी, एंड या फिर आप डिसाइसिवली उसके नीचे ही 50 पॉइंट स्लिप करें, अगर ड्यूरिंग द डे भी अगर आप ट्रेड करें तो, और सस्टेन करें। जैसे कि यहाँ पे हुआ था कि करीब आप 23,800 के पास आए थे, बट रिकवरी डे एंड तक आ गई थी कि 24,000 तक के पास आके बंद हुए थे। तो कहीं ना कहीं बुल्स कोशिश कर रहे हैं 24,000 को डिफेंड करने की, बेयर्स कोशिश कर रहे हैं 24,500 को डिफेंड करने की। तो इसी रेंज में, इसके लिए मैंने इस कंसोलिडेशन जोन नहीं लिखा है, इसको मैंने टसल जोन लिखा है, जो एक टग ऑफ वॉर में, एक रस्सा खींची में जो होता है कि हम किस साइड लेके जाएंगे, तो वही बेसिकली एक चल रहा है। तो एक साइड पे है कि 23,550 के लिए, और दूसरा साइड कोशिश कर रहा है 23,800 के लिए, 24,800 के लिए। तो अभी के लिए तो इंडेक्स में कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि किस साइड जाने वाला है, कंसिडरिंग कि आईटी के अलावा दूसरा कोई सेक्टर है ही नहीं जहां पे की स्ट्रेंथ हो। तो तेजी के लिए अभी नहीं, बट एट द सेम टाइम डिक्लाइन के लिए भी अभी उतना ज्यादा क्लियर सिग्नल नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर दे हैव करेक्टेड मोर देन 10% in this recent decline so far, and they are trading around their major averages. मतलब ये है कि ये जो लाल लाइन है निफ्टी की, जो कि अभी दूर है, अगर सेक्टर्स की बात करें, जो की सेक्टर्स हैं, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो रियल्टी हो,
इन सब में वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो गिराने के लिए भी नहीं है। तो ये बेसिकली अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मार्केट को अनफोल्ड होने में। शायद नेक्स्ट 2 सेशन 3 सेशन के बाद आपको पता लगेगा कि साइड हम जाने वाले हैं। सो ये हमारा व्यू है व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की कल्प्रेट बेसिकली, why we are not seeing any directional move. So as the beginning we saw that IT did well, right? So after a week of decline, IT recovered very strongly, and roughly around 4% kind of a gains. Banking, which is trading in this tight range, as you can see, this is the band for almost like a month now, that 50,500, 800, and 52,500. So this 2000 point kind of a range is something that we are stuck in. Last time also we've inched closer to the upper band, and signals were favorable that we might see a breakout this time. But again, it turned out to be a false signal, and again we are seeing that banking is reeling in the pressure. So only one sector is not going to help market to surpass that hurdle of 24,500 and extend it towards 24,800. We need to have the participation from at least 2 key sectors. From apart from IT, banking is something that we were eyeing the signal from. But after this dip, again it indicates that we might remain in the range. But at the same time, we have certain positive signals that when it comes to certain private banking majors like HDFC Bank is holding strong, while Axis, ICICI, they are witnessing mixed trend. But at the same time, PSU's basket, Bank of Baroda, SBI, they are showing relatively higher strength. So obviously they don't have weightage in the index, so that's not going to help much. When it comes to a directional move in the index. But yes, sentimental wise, it's a positive sign that if PSUs also contribute. But having said that, we need a decisive breakout from this range also, means a decisive close above 52,500 would push the index to this red line, which is around 53,500. And a break below this lower band can push the index to the long-term average, which is around 49,900 now, right? तो देखिए, जैसे कि हमने निफ्टी की बात की कि निफ्टी एक रेंज में फंस गया है, बैंक निफ्टी भी अब उसी रेंज का ही एक तरह से दिख रहा है कि पार्ट है। काफी हद तक उम्मीद थी कि इस बार जब यहाँ पे आपने 52,500 के पास अभी आए थे आप 2-3 दिन पहले, तो एक इंडिकेशन था कि शायद एक अटेम्प्ट करे और रिकवरी एक्सटेंड हो, बट वो हुआ नहीं, दोबारा से इसमें डिक्लाइन आ गया। तो जब तक बैंकिंग और आईटी दोनों अलाइन नहीं होते तब तक बहुत मुश्किल है निफ्टी के लिए 24,500 को ब्रेक करके सस्टेन करना। तो इसके लिए जब तक कि वो नहीं होता है, आप दोनों चीजों पे ध्यान रखिए कि आईटी कैसा परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग कैसा परफॉर्म कर रहा है। तीसरा, कोई भी सेक्टर उसमें उतना ज्यादा, हाँ अगर एक्सेप्शनल मूव हो गई किसी में, दैट इज डिफरेंट इशू। जैसे रिलायंस आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहां से रिकवरी आ जाए या ऐसा कुछ, अदरवाइज इन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी चीज नहीं है जो कि मार्केट को हेल्प कर सकता है 24,500 को क्रॉस करने में। तो फोकस इसी पे रखना है। सेलेक्टिव नेम्स, जैसे मैंने बताया कि HDFC की पोजीशनिंग बेटर है, SBI की पोजीशनिंग बेटर है, बेसिकली उसके अंदर नंबर्स भी हैं तो उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा अपने मंडे को। तो जब तक नहीं हो रहा है, जब तक तो स्टॉक स्पेसिफिक रही है, उसमें कोई मार्केट के साथ आर्ग्यू करने वाली बात नहीं है कि जब तक डायरेक्शन नहीं मिल रही है इंडेक्स में तो इट्स फाइन, दोनों साइड पे ही पोजीशनिंग मिल रही है तो उसके हिसाब से अपने पोजीशन को अलाइन करना है। बट यहाँ पे अभी एक तरह से मान के चलिए 50,500, 52,500, जब जिस साइड पे आप ब्रेक करेंगे उस साइड पे आपको मूव देखने को मिलेगा। 52,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर 53,500 तक के लेवल्स खुल जाएंगे, वहीं पे नीचे पे 50,000 तक। So this is about banking. Now let's talk about stocks, where one should focus, where we have the comfort, amid all these challenges that we are seeing in the market after 5 weeks of correction. So this is Bajaj Finserv, and as you can see on the screen itself, we have discussed about this stock earlier also when we were here, I guess.
last time, and we were anticipating a breakout, and turned out to be a very strong break, which helped the stock to make a new high. And after this move, we are again retraced to the critical neckline area of this triangle pattern. So from the last couple of weeks, we are seeing consolidation, a tight range movement in Bajaj Finserv around this neckline area. So we believe it's an opportunity, considering that usually a good stock, after a breakout, if it retraces to its neckline area, then after some consolidation, eventually again make an attempt of recovery. So here the risk to reward is favorable. Why I'm saying this? Because in case if it fails to hold this 1650 mark, then you are out of the trade. But what if it recovers? Then there's a possibility that it might make a new high, right? So स्टॉक्स के लिस्ट में पहला नाम बजाज फिनसर्व का। इस स्टॉक में हमने पहले भी बात की थी, जब ये एक रेंज में, टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो एंटिसिपेशन ये था कि अब जल्दी कंसोलिडेशन एंड होना चाहिए, हुआ भी और एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, नया हाई बना। बट मार्केट साथ साथ यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिल रही है, और ये दोबारा से अपने नेकलाइन एरिया जो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उन्हीं एरियाज के पास आके अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो एंटिसिपेशन ये है कि यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है अपने को, तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं फॉर एक्यूमुलेशन इन द कमिंग वीक्स, right? Next on the list is Coal India. So like what we mentioned about it's not an outrightly bullish market, so we are still seeing consolidation in the index, and we are seeing a mixed trend on the sectoral front also, and stock specific front also. So Coal India, we have discussed earlier also. I guess we were here somewhere here, I guess, last time when we discussed. Since then, we have seen this, tight consolidation below the major average, long-term average. So it's not a good sign. See, if the stock is anyways under pressure and it fails to recover above its major averages and consolidate in a tight range, indications are in the favor that it might make an attempt to inch further lower in the coming session. Right, so this is one candidate which one can look to go short as and when the market allows you the opportunity. तो देखिए, लॉन्ग की हमने बात की बजाज फिनसर्व की, वहीं पे कोल इंडिया एक शॉर्टिंग कैंडिडेट की तरह आप देख सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसे हमने पहले भी बात की थी, या हम यहाँ थे या शायद यहाँ थे, इन्हीं लेवल्स के पास 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन था उसका एक ब्रेक। तो जब से ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद से जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, जो कि दिखाती है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, उसके नीचे ही नीचे इसने कंसोलिडेट किया है। बीच में अटेम्प्ट हुए रिकवरी करने के, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए, और आज के दिन तो वैसे भी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, काफी शार्प नेगेटिव क्लोजिंग हुई है विद वॉल्यूम्स। तो इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे आपको प्रेशर बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो शॉर्टिंग के लिए अगर कोई कैंडिडेट देख रहे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी कोल इंडिया में आपको मिल सकती है। Lastly on the list, IT, for the obvious reason, because IT did well, and we have been discussing this for quite some time, in this webinars, that a sector which outperforms during the market corrective phase are likely to be the next strong performer or the outperformer once the market resumes the uptrend. तो देखिए, जो सेक्टर मार्केट के डिक्लाइनिंग फेज में आउट परफॉर्म करता है, वो यूजुअली वही सेक्टर मार्केट की जब भी तेजी रिकवरी शुरू होती है, तेजी शुरू होती है, वो सभी को, सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करता है। तो उस हिसाब से अभी तक आईटी एक ऐसा इकलौता सेक्टर अभी बचा है जहां पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। So among the IT majors, Infosys is something that again we have discussed multiple times. We still feel that it's an opportunity to accumulate the stock, considering that the sector is outperforming. It is also hovering around its record high, marginal correction from the record high. So it's definitely indicates strength within the sector also. Other names they are also good, means HCL Tech, obviously, that we we have discussed multiple times earlier also that it's among the top performing name. Then we have TCS, Coforge, Tech Mahindra. So IT, at least we have 5-6 names which are completely aligned to the index trend also, right? So जैसे हमने बात की कि IT में तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, और क्योंकि अगर सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा तो यूजुअली
आपको उसी सेक्टर में रहने चाहिए जहाँ पे कि मार्केट के ज्यादा स्ट्रेंथ है। अगर निफ्टी से ज्यादा किसी में स्ट्रेंथ है, निफ्टी गिर रहा है 9% और ये गिर रहा है आपका 2.5%, तो इट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव नहीं है और यहाँ से आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। राइट, तो जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी तो ये आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो उसके बेसिस पे ही आपको आईटी में इन्फोसिस पे लॉन्ग के लिए आप पोजिशनिंग देख सकते हैं। तो अगर इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक, पहला कि 24,500 इस रेंज से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा तब तक इस तरीके की वोलेटाइल स्विंग चलते रहेंगे बाजार में, थोड़ा सा मुश्किल होगा। हेज पोजीशन रखना ज़्यादा बेटर है। हेज मीन्स कि कुछ लॉन्ग कुछ शॉर्ट्स, या फिर अगर आपके पास लॉन्ग्स हैं तो उनको इंडेक्स पुट के साथ या फिर स्टॉक्स ऑप्शन के साथ हेज करना, वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा कि वेट करना जिस साइड के डायरेक्शन मार्केट पकड़ ले उसके बाद अपने पोजीशंस को लाइन करें। इन्वेस्टर्स के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि मार्केट के करेक्शन में यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी दे कैन आउट परफॉर्म। एंड लास्टली ऑन द लिस्ट वी हैव कोल इंडिया ऑल्सो। So why coal India? Because despite the overall positivity, we are still seeing the stock is under pressure. It didn't participate much in the bounce also, so it can continue to underperform the markets. So hence, as a shorting uh, candidate. So with this, we end this presentation now, and here's a quick feedback poll. So please fill in your feedback, and then you can start posting your question using that Q&A button. तो अपना फीडबैक देने के बाद जो भी सवाल है रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन, कोई भी सेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डेफिनेटली आप उसको लिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज वी यूजुअली अवॉइड to conclude the session on time. So those who are done with the feedback, they can start posting their question using that Q&A button. जो Q&A बटन है आपकी स्क्रीन पे, उसको यूज करते हुए आप क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं अगर आपने फीडबैक पोल में पार्टिसिपेट कर लिया है तो। All right, so we are almost done. Okay. All right, so we have questions in queue first. Okay, so Mr. AR has a question: view on IT sector, why Coforge gained so much despite the flat results. So obviously we'll not discuss much in details about stock specific queries, but yes, IT as a sector, like we've already discussed, is among the best performing names so far, and we expect this outperformance to continue also. And in fact, we have shared that Coforge is among the top performing names. So at times when the expectations are on negative side, or means market might not be expecting uh, the numbers which turned out during the earnings season, so that's the reason why we see the outperformance at times. So it's not necessary that a flat result or negative result triggers a negative reaction to in the stock prices. It completely depends upon the expectations largely. Okay, next we have a query on cement sector. So cement is definitely a mixed bag so far, but majority of names they are running under pressure. तो सीमेंट में देखिए थोड़ा सा टोन दिख रहा है, व्हेन इट कम्स टू मेजॉरिटी, जितने भी ज्यादातर सारे नाम हैं उन सभी में एक करेक्टिव टोन है, साइडवेज नेगेटिव टोन है। तो फॉर अ टाइम बिंग नाउ आई फील दैट दिस टोन माइट कंटिन्यू।
But the good part is that we are not seeing any pressure also, uh, or sharp decline also. So eventually, once we see some stability, so then possibility of strong reversals all seem high in cement pack. But as of now, it's an avoid. Okay, next we have auto space. So auto, like I've just shared during the presentation, that why we are not anticipating any major decline in the index from the current level also is that most of the key sectors, they are already at their 200 days of exponential moving average, which indicates a long-term trend. I'm not saying that we cannot break that mark and inch further lower. Uh, at least, in the first instance, once we test that area, we usually see some rebound or consolidation first before further decline. So that's the reason why we, in fact, for the auto, we have uh, almost in the second week around that area of long-term averages. So there's a possibility that we may see some respite, and in fact, we have already started seeing recovery in some of these names, like so M&M, Aisher, TVS. They were the one basically wherein we are seeing traction. So one should plan accordingly. Okay, next, Mr. Ajay Gupta. Thank you for the feedback and view on metals. So yes, metals are basically uh, they are also kind of a similar structure to what we've shared about cements. But the good part is that they are the bias is on the positive side for most of the metal names. Means either they are seeing recovery or they are on anyways trading closer to their record high. So National Aluminum is outrightly among the top performing names currently quoting at the record high. Then we have other counters like Jindal Steel, VEDL, JSW Steel, uh, which are among the top performing name. Hindalco post Nevalis results, it was also holding strong, but now after the numbers, we are seeing some correction or a sideways tone. So at the same time, Tata Steel, Hind Zinc, Hind Copper, SAIL, they are sitting on the sidelines as of now, but the trend is not negative. So metals looks okay, but one needs to be selective. And unlike cement, where indications are more on the negative side, here the possibility of a up move seems high. Okay. Okay, Infi, Coal, Bajaj Fin. So Bajaj Fin and Infi, they are both weekly charts, and Coal India is daily. So broader view on market after China stimulus and major results. So I personally feel that uh, the impact of any other global event other than the ongoing challenge that we are currently dealing with, means the continuous outflow of the fund. That's the first thing that should stop. Other things, you know, be it China stimulus or something happening on positive on the US front, that the markets are at the record highs and things like that, is not going to impact us until we see this reversal in the trend of what FIs are doing to our markets. Means a continuous outflow in October month and a similar kind of a trend in November month as well. So uh, global factors, I feel that for a time being now is not on our radar, at least for the positive reasons. In case if there will be any negative, yes, market might react to that. But positive is something that we are not closely following. So earnings and FIs flow, these are the two major factors which we are currently eyeing. Okay, real estate and FMCG. So real estate is at the critical juncture, like I've said. FMCG, unfortunately, we have already slipped below the major averages. Uh, and that too despite extreme oversold position. This is a question from Mr. Rajiv Kumar. So like what we're sharing that
usually we see a pause around the major average before making any meaningful move. So in FMCG, all the major names, be it Colgate, HUL, Dabur, ITC, they all are reading under pressure. ITC is comparatively better, but the rest of the name, they are not seeing any sign of respite. Britannia, Marico, they are comparatively better within this space. So my view is that until we see some decisive sign of recovery or reversal, one should avoid FMCG at least for the short-term trades. Real estate, on the other hand, majority of name here also we are seeing pressure. So DLF is struggling around 800 mark. Then we have Godrej Property, which is also struggling. At the same time, overall reality is holding strong and in fact it's trading at the record highs. So within the real estate space, majority names are on the negative side. So here, look for shorting opportunity, not for long trades. And once we see a recovery and reversal, then overall reality is something that one can consider for outperformance. Okay, next, Mr. Benjamin has question on post-US election. What will effect will Indian stock market have? So initially, we were just seeing that markets reacted positively to the election outcome. So it's basically short-term relief is what the indications were, because FIs, they are still selling. So there's no change in the stance on that front at least. And the major factor right now, which is driving the market, is not any global flows, what I mentioned earlier also. It's earning and the FIs flows. So sentimentally, though, DIs, they have almost, being neck to neck to what FIs are selling, but sentimentally it dents the overall equation if they continue to sell. So we need to see how this new government come and take the measures to boost the flows, because yesterday also the US Fed have gone with the rate cut. Are we going to see a similar action from the RBI? That is something that we'll come to know once we have the next policy meet. But as of now, I'm not seeing any major change, at least in the short run, post this US election results. So for IT, in some shares underperform. So IT, yes, we have already shared. Underperform, like Coal India, is something that we see as a potential candidate of underperformance. And then we have certain stocks from the banking basket also, like Bandhan Bank, RBL Bank. They are the one basically wherein we expect this underperformance that might continue. Okay, so Vishnu Narayanji has question, what is the timeline to pick up the market? So can you please rephrase your question? Means are you saying that when to invest? So the investment in good stock is something that completely depends upon the stock prices. It's a bottom-up approach. It's something that one should maintain in a market like this, because we were just discussing about FMCG seeing very sharp correction from the record highs. We are still not seeing any respite, but gradually and with a long-term time horizon, one can start accumulating quality names, right? So sector or theme-wise is something that you should maintain the approach instead of looking at the index, right? So among the if the view is long-term, let's say, then from the banking space, wherein we have already seen decent correction, means excess, ICICI, SDFC, they are anyways at the record highs, closer to the record highs. Then we have other names also from, diversified play like Reliance, where we have seen decent correction from the record highs. So these are some of the names wherein alongside with IT, which one can look to accumulate.
Okay. Okay, so see, I have requested not to ask for any stock specific queries because the session would be unending in that case. So, but energy as a basket we have already discussed in brief. So, just to touch upon OMCs, we are not seeing any respite yet. Despite the oversold position and post numbers also. So, but from here, I feel the downside seems capped. So maybe around, let's say, 5 to 7% more room that we have in case if the market corrects, then OMC can correct further. So one should act accordingly. One should not be aggressive. If the view is, let's say, short term, then one should not be aggressive in your positioning in the OMC basket on the long side. All right. So more stock specific queries. So yeah, largely we have covered almost all the sectors also. So thank you everyone for joining in. And next week, I guess Friday markets are closed. So we'll see whether we'll have a session on Thursday based on the closing. So we'll uh, meet accordingly. All right. So thank you everyone for joining in once again, and take care. Thank you.